फोकस आईटी सेक्टर की कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड पर करेंगे। याद रखिएगा, एक्सेंचर ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया और नतीजे आज शुरू ही होंगे अब Q4 के आना। ऐसी स्थिति में कितना स्ट्रॉन्ग आउटलुक है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसी है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड के एमडी और सीएफओ वेंकट रमन नारायणन और साथ ही कंपनी के प्रेसिडेंट एंड सीईओ राजीव शाह। आप दोनों का ही स्वागत है। मिस्टर वेंकट रमन, जब आपसे पिछले क्वार्टर बात हुई थी तब से अब तक काफी कुछ बदल गया है। रशिया यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई है, इंटरेस्ट रेट की एक साइकिल हमने देख ली बढ़ते हुए अमेरिका में, और ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन रिस्क्स भी बढ़ गए हैं। इन सब के बीच ये बताइए, काफी माहौल क्योंकि बदला है, क्या आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं अपने बिजनेस ग्रोथ को लेकर जितने पिछले क्वार्टर में थे? If you look at the inflationary scenario, there is wage inflation happening in US. उसका कारण जो भी है कास्ट इंक्रीज और फ्यूल कास्ट इंक्रीज जो भी है हो रहा है, बट इट अफेक्ट्स द इंडियन आईटी इंडस्ट्री फेवरेबली, क्योंकि उधर वेज बढ़ रही है तो ऑफशोर का डिमांड बढ़ता ही जाएगा। ऐसे ही कारण जब यूरोप में जंग हो रहा है, उधर भी हमारा पीपल हु हैव गॉट देयर लोकेशंस इन ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज, they are also trying to de-risk their delivery capabilities, which is also moving business to India. So India is now standing out as a place to which business is gravitating. Okay. Third thing is exchange rate. जो हमारा balance of payment, fuel import bill, इसके सब बात हो रहे हैं, मगर इसका असर हो रहा है कि exchange rate में अभी Indian rupee is slightly weakening. And being an offshore company, उसका भी असर positive ही होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारा 95% डिलीवरी ऑफशोर से होता है एंड ऑलमोस्ट 80% ऑफ आवर इनकम डॉलर में ही होता है। हाँ। तो कॉस्ट्स आर इन रुपीस, रेवेन्यूज इन डॉलर्स, तो ऑब्वियसली अ स्लाइड इन एक्सचेंज रेट हेल्प्स अस बेटर। सो दीस आर द पॉजिटिव्स फ्रॉम द वे चेंजेस आर हैपनिंग। नेगेटिव ऑब्वियसली एवरीबडी इज नाउ रशिंग टू इंडिया, तो डिमांड का बहुत द सप्लाई सिचुएशन इट वाज ऑलरेडी बैड, उस पे और भी प्रेशर होने लगा है, तो दैट मेक्स इट अ डिफिकल्ट टास्क टू गेट पीपल। तो सप्लाई साइड की रिस्क रहेंगे और फिर शायद अट्रिशन का प्रेशर रहेगा, लेकिन कमिंग टू द बिजनेस राजीव, फिर डिमांड की सिचुएशन क्या और बेहतर हुई है? पॉजिटिव साइड पे देखिए तो कोविड का जो असर था लास्ट 2 years or so, all the economies have opened up. Restrictions have gone away. So as uske mutabik the overall demand market has improved significantly. I think this is the companies are अपना जो digital roadmap जो बनाया था during COVID time, alternative business model जो बनाया था, now they are expediting the implementation of all the differentiated business model or digital asset utilization. So वो positive है. So COVID में आप देखेंगे तो economies are opened up, restrictions have gone up, travel has gone up. Yesterday, I think all the international flights to India also opened up. So I think it is all positive from that perspective. Okay. Given that, I think that all the segments, taking a retail CPG or high tech or manufacturing, सब जगह पे all verticals are looking at more and more spend on the digital side. So I think that is also very positive. So market has opened up. That means the consumer जो demand हायर has gone स्पेंड up. की आप बात कर रहे हैं राजीव, एंड स्पेसिफिक टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पिछले 2 सालों में इन लोगों को समझ में आया कि डिजिटल पे खर्च करना है, लेकिन अब क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ने लगा है तो इनकी ओवरऑल इनपुट कॉस्ट पर भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो क्या उतना खर्च करेंगे इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जितना इन्होंने पिछले 2 सालों में किया था? So I think that there are 2 aspects to things. I think one is that consumer demand is very strong. So I think there is a demand for the services and offerings in the marketplace, which will drive the more and more production or more and more things. The cost of goods compared to what it was, I think, hasn't kept up with the inflation factor. So inflation factor might be 7%, but the cost of goods or services have not gone up by 7%. So I think from that perspective, there is still a lag between cost of goods versus the actual price that the consumer is paying. Now one can debate on why that is the case, but I think there is something that's going on.
At the same time, I think that if you look at just pure play from the digital side of it, right? The digital mein to, there is no alternative for them to look at but adapt the new model. All right. And that's where most of the spend is going. Whether you look at supply chain, logistics, or online education to whatever. So I think the demand is so strong. I don't think the inflation is going to have an impact on the side of services that we offer. At the same time, the demand that we have in the marketplace. I get your point. तो basically इस समय at least चिंता नहीं है और spends intact हैं इन कंपनियों के. Coming back to the margin outlook और especially जो आपने रुपये के संदर्भ में कहा कि रुपये में काफी ज्यादा depreciation देखने को मिला है, इसकी कमजोरी का कितना फायदा आप roughly margins में translate होता देखेंगे, Mr. Venkatraman? If you look at exchange rate in isolation, 1% dip in rupee versus the dollar gets you about 0.4% improvement in EBITDA. So that's a straight calculation. But there are lots of other puts and takes that you have to consider. Wage increase, the utilization level, or on-site offshore revenue mix. ये सब मिला के it could be in the range of about 0.3 to 0.4%. Every 1% is what could directly hit your bottom line. और your gross margin. Okay, तो ये 0.3 to 0.4% की improvement देखने को मिल सकती है, ये मैं ऐसे समझूंगी. 20% प्लस के जो मार्जिन्स आपने पहले कहे थे आप एंजॉय करेंगे, फिर उस पर आप अभी भी स्थिर हैं, उस पर कमिटेड हैं. बहुत बहुत शुक्रिया राजीव शाह और मिस्टर वेंकटरमन हमारे लिए समय निकालने के लिए. शॉर्ट कॉन्वर्सेशन लेकिन इंसाइज कॉन्वर्सेशन है कि आउटलुक में कोई बदलाव नहीं, कंपनी एकदम बुलिश है अपने फ्यूचर को लेकर और जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स इस समय इनके पार्टनर से इनके हाथ लग रहे हैं उसके मद्देनजर. हालांकि स्टॉक आज थोड़ा सा नरम होता हुआ खुला मजबूत लेकिन फिर लड़खड़ाया है.